is the Millet Mania round. We've got Chef Bhairav Singh over here. And for him, millets is something very close to his heart. And he's really into naturopathy, to Ayurveda, and therefore into millets and using that as a part of his regular cuisine. And also to introduce Indian food to the world in a format which is comfortable to people. And right now he's also the chef for the native restaurant, and he does pop-ups. Let me introduce you to the three chefs. So we got Meeta Kataria over here, and she runs chicken meals by default. That's Mr. Yogendra Vashisht. He's part of Topojima in Mumbai, and he does Rajasthani food. And the Mona Atkar, she does dough and creme. We've got our sponsors here of ITC. So they have provided a couple of their millet products, which is the multi-millet mix, the ragi flour, and there's also the ghee from them. Key sponsor is Swiss. So Chef Bhairav Rajasthan का एक गांव से है, वहाँ पे बड़ा हुआ है. तो इसलिए like this is something which is very close to his heart. Naturopathy, Ayurveda, millets. He's doing some wonderful stuff to surprise chefs internationally. He writes columns for UpperCrust on health. He's not only one of my favorite chefs, he's one of the most deserving, the most hardworking, the most genuine, the most sincere chefs that I know. He does everything from the heart in a very genuine manner. The millets जो है वो आज नया नहीं है. मिलेट जो है वो अब नया हर जगह कुछ मिल नहीं रहा है तो कुछ नया करना है तो मिलेट्स जो है यार. बट मिलेट्स की आप स्टोरी अगर ढूंढेंगे तो शास्त्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है. उस वक्त अनाज अगर कहीं लिखा था तो जवार, बाजरा, कुटकी, कोदू, गेहूं का जो इतिहास है वो बहुत कम है. बट जिस तरीके से भी अवेयरनेस आ रही है और जिस तरीके यंग लोगों को आ रही है कि यार मुझे टाकोस खाना है बट बाजरे का टाकोस बना के दे कोई, मुझे नाचनी के टोस्ट कोई बना के दे दे, मुझे कुकीज़ खानी है बट कोदू की कुकीज़ मिल जाए, या खीर खानी है, फिरनी खानी है. तो नॉट इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे भी जहाँ भी मैं जा रहा हूँ हर कोई मिलेट्स के बारे में बात कर रहा है. और ये हमारे लिए सबसे प्राउड की बात है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मिलेट होती है. जो भी यूज़ करें उसको बस उसका तरीका पता होना चाहिए. एंड जितना इंग्रेडिएंट के साथ सिंप्लिसिटी रहेगी उसका टेस्ट उतना अच्छा होगा. नहीं तो हमारे साथ क्या हो गया है कि हम खिचड़ी बना रहे हैं और डब्बे वाले मसाले ला रहे हैं और खूब सारे मसाले डाल रहे हैं तो खिचड़ी का टेस्ट तो चला गया. हर मिलेट्स का अपना एक टेस्ट है, हर मिलेट्स की अपनी तासीर है. अगर उसके न्यूट्रिशन बचाने तो 90% कुकर ना यूज़ करें. आप ओपन फ्लेम पे पकाए, उसको धीमे पकाए, आपको पूरे न्यूट्रिशन मिलेंगे. और आजकल वही हो रहा है. हमारा मोटापे का कारण खाना है, सही तरीके से नहीं खाना. रागी जो है, रागी में तो बेसिक जैसे आटा यूज़ कर रहे हो आप आटा नहीं, उसके तो आप लाइक हम लोग लापसी बनाते हैं उसकी. हम लोग अगर मॉडर्न इंडियन में हम तो उसका मूस भी बनाया था. रागी को मस्त भिगाइए, उसके अंदर आपको मॉडर्न टाइप से बनाना है. थोड़ी चीज़ डालिए, थोड़ा हरी मिर्च, धनिया डाल के उसको पेस्ट मारिए अच्छे से, थोड़ा स्टीम कर लीजिए लाइक ढोकले कैसे स्टीम करते हैं. फिर अच्छा मिलाइए, वो टोकरी में भरिए, गार्निश, और आपको रागी मूस हो गया. मैं तो बाजरे की बियर भी बनाता हूँ. थोड़े दिन में हम उसका प्रमोशन भी करेंगे. मिलेट्स की कम से कम 3 या 4 टाइप मिलेट्स की बियर बनाई हमने. सोडा बना दिया है उसका. सो ये तो आपके दिमाग की उपज है और सब हमारे पास ही है. आपको सिर्फ शांति से बैठ के सोचना है कि इसको मैं कर क्या सकती हूँ. So it is mixed millet flour. The churma normally is made with bajri and gehu also. I have made it with bajra, and instead of sugar I have used jaggery. And dal is a 2 dal, which is moong ki dal and chana dal. Today I decided to go ahead with Korean. So this is your kimchi flavored finger millet, or kangani as we call it. The kimchi has been made by me, and I've even pickled some radish and kept on top. That is also like kimchi radish. And these are dumplings which I've tried. The inspiration is the mandu, or the Korean dumpling, stuffed with tofu, some corn, and just for flavoring I've added some garlic and spring onions. I
have made millet taxi maxi mania, but I have taken our India, Bharat to Mexico. Tacos are made of ragi, and it is on the bed of jowar and ragi. And the surprise drink I was talking about is nothing big, I feel. So jowar was boiled, and the same water I have used for making the drink, that is jowar ginger ale with lemon and ginger with little salt and jeera in it.